को चुनता हूँ जब सब ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं. They're all blindfolded. You choose the 3 traitors. Subsequently, only the 3 traitors, when they meet each other, know who the traitors are. सबको अभी पता है कि यहाँ हमारे बीच 3 traitors हैं, और that's when the fun begins. क्योंकि हर रात एक murder होता है, और फिर हर दिन सर्कल ऑफ शक में ये मुआयना होता है कि कौन है ट्रेटर. And invariably things go either way, because जो innocents है वो invariably they don't get it right कि traitor कौन है. Sometimes they have got it right, but that I wait for everyone to watch. लेकिन हर रात एक murder जरूर होता है, और murder उस तरह नहीं जैसे हम imagine कर रहे हो. It's a virtual murder. Okay. Virtual murder meaning शब्दों से उनको कहा जाता है कि आपकी रिहाई हो गई, आपका मर्डर हो गया, चले जाइए. और रातों रात जिसका भी मर्डर होता है उसे अपना बेचारा बैग पकड़ के पैक करके प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ता है. Immediately they are murdered, and every night there is a murder. All right, so it's a circle of shak. What is that? सर्कल ऑफ शक में जो सारे 20 इनिशियली जो 20 थे वो डिस्कस करते हैं कि ट्रेटर कौन है, और वहां सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है क्योंकि मुझे सर्कल ऑफ शक से इर्द गिर्द घूमना है. मुझे देखना है, मैं जानता हूं सब कुछ, और उनकी लड़ाइयां वो सब एक दूसरे को देख के कह रहे हैं कि मुझे लगता है तू ट्रेटर है, मुझे लगता है तू ट्रेटर है, और ये सारे सब अपने अपनी राय उस सर्कल ऑफ शक में वहां बयां करते हैं. और वो सर्कल ऑफ शक जो है ना, इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि यू एज एन ऑडियंस आपको पता है यू आर इन ऑन द गेम, लेकिन वो लोग जो है ना दे आर नॉट इन ऑन द गेम. तो वो आपको बुरा भी लग रहा है कि शिट व्हाट आर यू सेइंग, नो नो ही इज, आप यू स्टार्ट प्लेइंग दैट गेम, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रेटर्स कि द इंटरैक्टिव लेवल बिटवीन ऑडियंस एंड शो इज द मैक्सिमम. वो आपको किसी और रियलिटी शो में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बेड पे बैठे, घर पे बैठे, जहां भी आप देख रहे हो शो, यू स्टार्ट फीलिंग इन्वेस्टेड इन द गेम, लाइक यू स्टार्ट टॉकिंग बैक टू द गेम. जब लोग मॉनिटर रूम में देख रहे थे तो सब बात करते रहे, यार पागल है, ये नहीं है, ये सच है, चुप करो, ये झूठ है. यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग. सर्कल ऑफ शक में ये सब होता है, एंड दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द शो, द सर्कल ऑफ शक. एंड देन जब 3 ट्रेटर्स रात को मिलते हैं और वो जब डिसाइड करते तय करते कि मर्डर किसका है, दैट इज द मोस्ट लाइक हार्ट ब्रेकिंग टाइम. और फिर सुबह सुबह मुझे आके उस एक पर्सन की तस्वीर गिरानी होती है, क्योंकि वॉल पे सबके लगे हैं कि उनका मर्डर हो गया है, और फिर उनके चेहरे पे क्रॉस लग जाता है. So we have to wait till the 12th of June. बेसब्री से इंतजार है to get connected to the Yeah. world of traitors. It's a long wait. I have to tell you, for a show like this, it's too long to wait. I know we can't, but we कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है. बेसब्री से इंतजार रहेगा. Thank you so much, Karan. I'm going to request you to please join Nikhil right there at the hot seat. Thank you for spilling. Well, up first, he spits fire with his words and moves. It's Raftar. She plays sweet and slays with it too. Jannat Zubair. First he charms, then disarms. Sahil Salatia. And she stuns with passion and fearless flair. One and only Urfi Javed. Welcome to all 4 of you to the first set of players. Welcome to the trailer launch of the traitors. Raftar pehla saal aapse hai. With all the dhoka going around, are we going to see a very different avatar and cold-blooded shade of you? सर ये जो लैंड है ना, ये धोखेबाजों का है, ये ट्रेटर्स की जमीन है. तो जैसा देश वैसा भेस, और जैसा क्रिमिनल वैसा केस. Oh, man of yours! Impressive. If I could request you hand over the mic to her. Thank you. Jannat, what is the one secret weapon that will help you survive in such a cutthroat game and filled with backstabbing, stabbing, and out-and-out dhoka? I think my sweet and innocent looking face. People don't think twice before trusting me. And what they don't know is, behind this innocent face, there's this person who's always 5 steps ahead of them. So I'm gonna play my game, stay calm, and as soon as they put their cards down, checkmate. Well, she's restating the fact, looks are deceptive, but wishing you the best.
Sahil, my questions to you. It seems like the competition is going to be extremely intense and the stakes sky high. Do you think you'll be able to work your charm on this show? Interesting. Now, I think charm doesn't work. It happens, first of all. But secondly, मेरे को आस्तीन में सांप पालने की बहुत आदत है, so I hope मैं वो escape कर पाऊँ. Because fingers crossed, I think I'm going to be very lucky this time. We wish you the best and Thank thank you you. so much. Thank you. Urfi, my next question is for you. अब ये जो है इस particular group में यानी कि रफ्तार, जन्नत, साहिल इनमें से आपको सबसे बड़ा खतरा कौन लगता मुझे सबसे बड़ा खतरा साहिल लग रहा है. है? He's Sahil. I think Sahil is the biggest threat. हाँ? वो तो हम 12 जून के बाद जानेंगे क्या क्या किया और क्या क्या हुआ है. But wishing you guys the best and thank you so much. Thank you. Get the mic. Thank you. ये तो बस शुरुआत थी. The first set of players. Let's call our second group of players of the Traders. सारे के सारे कदम फूक कर रख रहे हैं. Up first, she is a rebel who breaks rules as a rule. Apurva. Now, this one is a professional charmer who knows how to play sweet. Karan Kundra. She plays cards for a living and players for sport. Nikita Luther. And he is serving snark and side-eye. Sufi Motiwala. Welcome to our next set of players of the Traders. Welcome to all four of you. Apurva, my first question is for you. इस शो पे एक से बढ़कर एक रेड फ्लैग्स हैं, पर आप इस शो की सबसे बड़ी रेड फ्लैग किसे बनाएंगे? I think people just think that being a red flag is about lying, manipulation, and deception. And all of that is true. But to do all of that, you require brains, which unfortunately most of these people don't have. So I don't know if I'm the biggest red flag, but I use more than one brain cell at all times. Well, hard है. If you can request to hand the mic to Karan, you know what you have to say, and you know you've been television's favorite chocolate boy. Do you think that will affect the players' perception of you? First of all, good afternoon, good evening, everybody. There's nothing chocolatey or sweet about Traders. Let me just state that fact here. If you think there's anything which is going to be nice and sweet and homely about this show, you're in for a very big surprise. And as Apurva said, you know, it's not about your perception. It's about how you play and how you manipulate. So if these guys are thinking कि ये chocolatey है या ये बहुत sweet है, well, all the best to you guys then. No place for the sweet tooth here. Wishing you the best, Karan. If you could hand over the mic to Nikita. Nikita, you make a living off your poker face and and skills. Now, do you think your game at the poker table will help you with your game on the show? Yes, first I want to address Apurva. She said nobody uses more than one brain cell. Darling, I use all of them for a living. And yeah, my job is to stay unreadable for a living while reading everyone else. So yes, this game is right up my alley. It might not just be helpful to be a poker player, it might be actually dangerous. Well, thank you for giving us this banter and this appetizer to start with, man. Thank you. We love it. Sufi, why don't you do what you do the best? Is Jesus. rate this group
that's sharing the stage with you. Rate it, come on. Everybody's ready? बेशरम, बेहया, बेवकूफ, बगैरत, बदतमीज, बेहुदगिरी, सब कुछ करके आ गए हम लोग. Just kidding. I do not like this question because you want me to be nice, but I play dirty and you know that. And to the media, imagine if Rakhi Sawant and Paris Hilton had a baby. That's what I'm getting on this show, and that is a 10 out of 10, baby. That's a 10 out of 10. We love that concoction. Thank you so much and wishing you guys the best. Thank you. Thank you. Let me get the rockstar. Thank you guys. Thank you. All right, that was quite kadakta pradakta, I must say, right? It's just. His mass entrances have been making headlines for years. It is Raj Kundra. She is absolutely breaking hearts and breaking the internet. Elnaz Norozi. Scintillating combination of Hollywood flair and Tollywood legacy. Lakshmi Manju. His strategy hides behind stand up. You laugh and he's already won. Harsh Gujral. She might look calm, but she's got a quiet game brewing under that smile. Anshula Kapoor. Welcome to all five of you and wishing you the best for the Traitors. Raj, my first question's for you. How do you think your fellow players will perceive you and what's your strategy? क्या है planning इस game के लिए? जब भी मैंने लाइफ में एक मास्क पहना है सबको यही लगा कि ये बंदा मास्क के पीछे क्या छुपा रहा है. एक मिस्ट्री है, तो आई थिंक दैट मिस्ट्री माइट हेल्प मी इन दिस गेम. ये कलयुग का शो है ट्रेटर्स. इस पे पता नहीं चलेगा दोस्त कौन और दुश्मन कौन एक मिनट में. यही स्ट्रैटेजी लेके आई एम गोना होप दैट जो मिस्ट्री है मेरे पीछे इट माइट हेल्प मी इन दिस गेम. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, करण सर शो होस्ट कर रहे हैं तो वो नेपो हस्बैंड वाला कार्ड तो जरूर यूज करूंगा. Wish you the best. Elnaz, how far would you go to win and how important is it personally for you to win? Well, winning for me is very important because I haven't crossed continents to break into one of the toughest industries to play it safe. So I'm going to go as far as I have to go and I'm going to look good doing it and I'm going to do everything to win forever in life. And you fared extremely well so far. Wishing you the best. Thank you so much. Lakshmi, do you think you can win over friends and influence people? I'm winning right here, standing in front of all of you. Very good morning. And influence, I've been influencing since some of these traitors knew what content was, darling. So I'm here to win and influence. Thank you and wish you the best. Harsh. Yes. Drama and laughs. Sounds like your stage. Now, इस शो में क्या आप प्लेयर्स को हंसाने वाले हैं या रुलाने वाले हैं? क्या प्लान है? सर इस स्टेज पे इस शो में ना मैं हंसाऊंगा ना मैं रुलाऊंगा, मैं सिर्फ मारूंगा और बहुत लंबा मारूंगा. आई एम कमिंग द ट्रेटर्स. थैंक यू. उसकी गूंज सुनाई देगी दूर दूर तक. हाँ सर, मुझे तो आप भी ट्रेटर लग रहे हो. चौथा नहीं है अभी तक 3 ही है सिर्फ. वो ढूंढना है कौन है, पर 12 जून के बाद. Thank you so much, man. Thank you. If I could request to hand over the mic, Anshula, would you be able to betray someone to go and get ahead in the game, out and out?
You called me innocent and calm. I may look innocent and calm. I may look cute even. But acting तो हमारे खून में है ना. And killing it with a little bit of confidence and killing it with a smile on my face, I think is my forte. So you got all the elements right in place there. Wishing you the best and thank you so much. Thank you. I'm going to get the mic. Thank you. The next set of players are gearing up for Dhoka. Let's bring it on! Well, the traitors में यही होता है, कौन किसकी जगह लेगा, कौन कब अपना पासा पलटेगा. You never know what happens here, and that's exactly what's happening right now on stage 2. It is the mind game. And our next set of players are ready. Our first, he's an actor, model, singer, writer, and producer. Is there a role he is yet to play? It is Sudhanshu Pandey. The next one reads tarot, but expect her to reveal your fate just yet. Janvi Kaur. He mimics for fun, breaks the internet for real. Purav Jha. And she's sweet on the outside, savage on the inside. Jasmine Basim. Welcome to all four of you. Welcome. Thank you so much for joining us. Now, Sudhanshu, my questions are first for you. You have so many avatars. Which avatar will we be seeing of yours in the show? And also, will you be the villain, or do you have something else up your sleeve? I think this is a reality show. I'm going to keep it real. Just be myself, and my strategy is going to be not have a strategy. Just be myself. Basically, that is what it's going to be. His voice is more than enough when he starts talking in there, right? So, but thank you and wishing you the best, Sudhanshu. Thank you. Thank you. Janvi, my questions to you. You know, as a tarot reader, you're quite a mind reader to people reader too. So, do you think you're a threat to other players? Thank you for your question. ये एक धोखों का सब महासागर है एंड हर एक का धोखा देने का एक अपना स्टाइल है. तो हर धोखे से और हर एक के धोखे से कैसे बचना है, कैसे उसे डॉज करना है, आई थिंक दैट विल बी इन माय फेवर. काफी तरीके और पैसे आप ऑलरेडी तैयार करके लाई. आप योर स्लीव, विशिंग यू द बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. पूरा एक्टिंग तो आप कर लेते हैं, रियलिटी में सर्वाइव कैसे करो? एक्चुअली एक्टिंग ही हर जगह करनी चाहिए और मैंने यहाँ भी वही किया है. तो आपको एक बहुत खास कैरेक्टर देखने को मिलेगा पूरव झा का, ठीक है? तो हर थर्सडे के लिए रेडी रहना. यस. मुझे चेतावनी मिली है यहाँ. Ready? I'm absolutely ready, and so is everyone. Your Jasmine, you know, जितने दोस्त के साथ आप इस गेम में आई हैं, क्या लगता है उतने ही लेके जाएंगी या उसमें कम होंगे या बढ़त होगी? हो सकता है ज्यादा के साथ जाऊं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि गेम शो में दोस्त कोई नहीं होता, सब कॉम्पिटिटर होते हैं. इस कंपटीशन में आपका स्वागत है और आपको बेस्ट विशेस फ्रॉम पोकर फेसेस टू ब्लॉक ट्विस्ट.